standard form, I told you y is equal to a sin omega t minus kx. This is the standard form of simple harmonic plane progressive wave traveling along positive x direction. Okay, and if you take the standard form of simple harmonic progressive wave traveling along negative x direction, then you have to put here plus sign. Okay, and here in this expression, A is the amplitude of the wave. Amplitude means maximum displacement. Okay, during wave motion, you know, each and every particle will execute simple harmonic motion. Okay, and capital T is the time in which particle completes one vibration. Then number of vibration completed by the particle in 1 second is frequency. Okay, then A is the amplitude. Amplitude means the maximum displacement in one direction about the fixed point. From here to here, displacement is A. Otherwise, if particle starts from mean, reaches the point P, cover a distance y, takes time t. So y is the displacement of the particle in time t. But when particle goes from mean to extreme position, then y becomes maximum. And maximum value of y is A. So y maximum is A. And time taken to achieve maximum displacement in one direction will be t by 4. Okay. So A is the amplitude. Then omega. Omega is angular frequency. It is 2 pi by t or 2 pi n. 1 over t is frequency. Then you have t any time. Yes, sir. When the particle is executing simple harmonic motion and the particle is taking part in the transmission of wave from one point to another through the elastic medium. And the cause of propagation of wave, I told you, the repeated and periodic vibration of the particles of the medium about their mean position. Every particle executes simple harmonic motion and hands over energy, receives energy from one point, hands over to the neighboring point. This is what is going on during wave motion. Okay? So, omega is the angular frequency, T is the time period, N is the frequency. Then K, told you yesterday, K is equal to 2 pi by lambda. Where lambda is wavelength. Wavelength is the distance traveled by the wave in this time. And this is the time in which particle completes one full vibration. So this is the distance traveled by the wave in this time. Okay? And I told you second definition of wavelength. It is the distance between two nearest points which vibrate in the same phase. Then I told you lambda in the case of longitudinal wave. Lambda is the distance between two nearest compression or distance between two conductive rarefaction. Okay? So, you are familiar with A also. Now, y and x. X is the distance traveled by the wave in this time, in which particle travels a distance y. There are two things in motion, particle of the medium and the wave. Wave is moving along a straight line and wave is traveling with constant speed. Whereas particle is executing simple harmonic motion and its velocity is variable. Let us take u as the particle velocity and v as the wave velocity. Particle velocity and wave velocity, they are related to each other. I will make use of one more item, that is dy by dx. X and y, both are the distances. X is the distance traveled by wave. Y is the distance traveled by particle while executing simple harmonic motion. Both are variable.
With the passage of time, y is also changing, x is also changing. Okay. Now, if you see the variation of y with respect to x, dy by dx, means if you plot a graph between x and y, so this will be the slope of xy curve. Dy by dx. Then dy by dt, dx by dt. What are these things? Dy by dt. Distance traveled by the particle in time dt. This is particle velocity. This is equal to u. Then dx by dt. Dx distance traveled by the wave in time dt. So this will give you wave velocity. Particle velocity, wave velocity, and dy by dx is slope. These three things will be related to each other. And we can derive this relation among these physical quantities making use of this. You know, this displacement y is a function of x and t. Y is a function of x and t. Omega and k are constant. Okay, x and y are variable. So if you want particle velocity, to differentiate this, dy by dt, it will be omega a cos of omega t minus kx. Dy by dt, differentiate y with respect to t. A is constant amplitude, differentiation sign is cos, then you differentiate this omega t minus kx with respect to t. It is independent time, differentiation will be 0 and differentiation of omega t will be omega. So it's multiply करते हैं. Okay, so what is this? This is particle velocity. And you can write this like this also. Omega a sine of omega t minus kx plus pi by 2. You can convert sine into cos, cos into sine. Sine and cos, they have phase difference of pi by 2. Sine of 90 plus theta is cos theta. Now why I have converted u in terms of sine? Because I want to see what is the phase difference between displacement and velocity. Displacement of the particle, the velocity of the particle, they are not in the same phase. Phase of displacement is this, and phase of velocity, particle velocity is this. There is a difference. That is a phase difference. Yesterday I told you phase, what is phase and what is epoch. Yes, sir. Okay, so this is the phase of the displacement, this is the phase of the particle velocity. They are not same. There is a phase difference of pi by 2 radian. Okay, that means the particle velocity and wave velocity, they do not go in the same phase. Particle velocity is leading the displacement by 90 degree. प्लस पाई बाय 2 है ये लीड कर रहा है, इसका फेज ज़्यादा है, इसका फेज कम है, दोनों में फेज डिफरेंस है. ओके, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? जब ये 0 होगा, ये मैक्सिमम होगा. दिस हैपेंस एट द मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन है, यहाँ y 0 है, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है. Maximum velocity of the particle is omega a. Sine has maximum value 1. Sine of any angle has maximum value 1. Okay, and this is a function of sine. The maximum value of u will be when sine is 1. And that will be omega a. Particle का maximum velocity है. And particle when crosses the mean position, it crosses with maximum speed. When it goes to extreme position, velocity becomes 0.
comes momentarily in the state of rest. ऐसे जा रहा है स्विंग, आप देखो यहाँ रुकता है फिर वापस आता है, स्पीड बढ़ती चली जाती है, मीन में मैक्सिमम स्पीड से क्रॉस करती, फिर स्पीड घटती चली जाती है, एक्सट्रीम में फिर जीरो हो जाती है. पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल, बट वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ओके, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज दिस. इन पार्टिकल velocity or displacement of the particle, they are not in the same phase. Particle velocity is leading the displacement by pi by 2. Remember. Then particle acceleration. Particle acceleration, that is du by dt. The rate of change of velocity is acceleration. We talk about acceleration only when there is a change in velocity. Particle velocity is variable. Wave velocity is constant. There is no acceleration in the wave. Moves with same velocity. There is no change in the speed. So we will not talk about acceleration of the wave. The acceleration of the particle is there. Where particle velocity is variable. So differentiate u with respect to t, you will get acceleration. Differentiate this with respect to time. So sign differentiation will be cos omega t minus kx plus pi by 2 omega a constant. Then you differentiate this again. This is constant, differentiation will be 0, differentiation will be 0 and differentiation will be omega. तो इसको आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं. So this is acceleration of the particle of the medium which is taking part in the transmission of wave, and particle is executing simple harmonically. So acceleration of the particle is, you can express this like this also, minus omega a sin omega t minus kx cos 90 plus theta is minus sin theta. 90 plus means second quadrant. And second cos is a negative in second quadrant. Okay? So acceleration can be written in this way also. Then the maximum acceleration, that is minus omega square, where sin has got the maximum value 1. Okay? This item, what is this? This is y. Therefore, this acceleration is minus omega square y. When you say maximum acceleration, so you have to go for maximum value of y. Maximum value of y is a. ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. जिस पे डिपेंड करता है, जिस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है. अब एक्सेलरेशन y पे डिपेंड करता है. ओके, अब इसमें देखो, आप यहाँ एक्सेलरेशन को हमने अगर साइन में कन्वर्ट करना, साइन में ही रखना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई. साइन 180 plus theta. Third quadrant, add sugar to coffee, it is negative. Minus sign will get absorbed. Okay, now the question is, why I am expressing acceleration in terms of sine function? Because I want to compare the phases of these three items. Displacement and velocity, they are running out of phase by pi by 2 and particle velocity is leading. Now you compare these two items with acceleration. What is the phase of acceleration? This is the phase. And what is the phase of velocity? They are different. Phase of particle velocity and phase of particle acceleration, they are not same. Okay? Then acceleration is leading the particle velocity by pi by 2.
यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ पाई है, फेज में डिफरेंस पाई और पाई बाय 2 में फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 का, ये लीड कर रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने इनका फेज डिफरेंस भी देखा कि कौन लीड कर रहा है, कौन सेम फेज में। तो particle displacement, particle velocity, particle acceleration, all these three quantities related to the particle motion are not in the same phase. There is a phase difference. तो हमने देख लिया कौन लीड कर रहा है, कितना फेज डिफरेंस है किसमें। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेना है, या तो सारे साइन 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 या सारे कॉस कॉस कॉस, एंड यू हैव ए कन्वर्शन फार्मूला हाउ टू कन्वर्ट साइन इनटू कॉस एंड कॉस इनटू साइन। 90 डिग्री का है, पाई बाय 2 ऐड करना होता है। क्लियर? सो वन आइटम dy by dt, dy by dt which was particle velocity, and we got this from this y is equal to a sin omega t minus kx. This was y, now this is particle velocity, इसको डिफरेंशिएट किया तो you get omega a cos of omega t minus kx. This is particle velocity. This is dy by dt. Now you have dx by dt. This is v. Now you have dy by dx. Slope of xy graph. You know x and y. X distance traveled by the wave and y displacement of the particle. Both are time dependent. And this is also called slope of xy curve. Okay, so where from you will get dy by dx. dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. dy by dt divided by dx by dt. On solving this, you will get this. Okay. This is particle velocity. This is wave velocity. Wave velocity is constant. Particle velocity is variable. This is particle velocity. Okay. Then you divide, you will get dy by dx. Which means particle velocity is equal to wave velocity into the slope of xy curve. U is equal to dy by dx multiplied by v. Okay, but wave velocity multiplied by slope of xy curve will give you particle velocity. Relation आ गया between particle velocity, wave velocity and slope of xy graph. Then you have standard form of simple harmonic progressive wave given by y is equal to a sin omega t minus kx. Now this item I told you is phase and it is a function of x and t. This is omega t minus kx. You can write this like this also. This is phase. And epoch is the value of phase when t is 0 and x is 0. Initial phase, that is epoch. So when you put x is equal to 0 and t is equal to 0, phase will be 0. Okay. In case of velocity, you have omega a sine of omega t minus kx plus pi by 2.
this is phase of the particle velocity. And here if you put t is equal to 0 and x is equal to 0, you will get pi by 2 left hand. Okay? But in case of displacement, I have taken the expression standard form of simple harmonic progressive wave by y is equal to a sin omega t minus kx. You can be given this as in this form also. 0.25 10 raised to the power, let us suppose minus 0.2 into x sine of 314t minus 0.5x plus pi by 2. If you are given that simple harmonic progressive wave is traveling and it is being described by this relation, then what is the amplitude? This is the amplitude. What is the phase? This is the phase. Phase means this will be 314t minus 0.5x plus pi by 2. This is the phase. Depends upon x and t. This is the phase at time t. At a place where wave has reached after traveling a distance x. वेव जहाँ से भी चली है, हमारा ट्रांसमीटर है, रेडियो वेव, टीवी वेव को ट्रांसमिट कर रहा है, या रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन से म्यूजिक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या टीवी ट्रांसमीटर है, वो टीवी का कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहा है, आपके घर में टीवी लगा, ये रिसीवर है, और BBC लंदन से प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है, आपके यहाँ वेव आ रही है, टीवी वेव है, टीवी वेव हो, रेडियो वेव हो, ठीक है, कोई भी वेव हो, वेव मीन्स एनर्जी। तो BBC लंदन से आपके यहाँ रिसीवर ने वेव रिसीव की है, एक्स की वैल्यू क्या है, जो वेव ने डिस्टेंस कवर किया BBC लंदन ट्रांसमीटर से यहाँ तक, वो एक्स है। हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, वो स्मॉल टी है। ओके, उसका फेज अब इसे अगर एक्सप्रेस करते हैं तो ये फेज है। इपोक क्या है? व्हाट इज इपोक? इपोक इज इनिशियल फेज व्हेन x is 0, t is 0. It is only pi by 2. This is phase, this is epoch. Epoch means initial phase. Epoch means phase at t is equal to 0 and x is equal to 0. Means phase at the origin. Origin is the reference point. We start measuring x and t with respect to origin. Okay? That origin we take x is equal to 0, t is equal to 0. So transmitter will be having x is equal to 0, t is equal to 0. But at this place where we have received the TV wave, x is equal to the distance which wave has traveled. T is the time which wave has taken in coming from transmitter to this place, transmitter to receiver. Okay, the different receiver, they are located at different distance from the same transmitter. तो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करके वेव पहुंचेगी। याद में पॉइंट? और प्रोग्रेसिव वेव है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। इट मीन्स एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम will be executing simple harmonic progression. And each particle will start vibrating a little later than its predecessor. And in electromagnetic wave, medium is not required. It can transmit it through, can be transmitted through vacuum even. The electromagnetic wave, उसमें electric energy, magnetic energy होती है. But I am talking about mechanical wave, which requires medium. Without medium, transmission of mechanical wave may be longitudinal or transverse, not possible. A medium must be highly elastic, medium must possess inertia, and medium should not offer resistance to the propagation of wave. Or minimum. मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो हम मैकेनिकल वेव ले रहे हैं, उसमें मीडियम इज रिक्वायर्ड
और उसमें मीडियम के जितने भी पार्टिकल हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन द वेव मोशन. Any particle which will receive wave energy will have to be passed on to the neighboring particle. And every particle will perform simple harmonic motion in the same fashion, same time period, same frequency, same amplitude, सब कुछ सेम होगा. लेकिन पार्टिकल, सारे मीडियम के पार्टिकल जो है सेम टाइम पे वाइब्रेट नहीं करेंगे. जहाँ तक अभी एनर्जी गई नहीं, वो तक नींद में बैठा है. अब जिसको एनर्जी मिल चुकी है इमीडिएटली वो ऐसे जम करने लग जाएगा. लेबरिंग को आसन करेगा, फिर वही चीज़, क्योंकि रिपीटेड एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम इज द काज ऑफ वेव मोशन. तो हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ली. ये मान लो हमें ये वेव दे रखी है और इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली क्या है, जैसे एम्पलीट्यूड क्या है, ये एम्पलीट्यूड है. ये क्या होता है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू. तो वाई का यूनिट आपको दिया होगा, वाई शुड बी टेकन इन सेंटीमीटर या मिलीमीटर. ओके. एक्स तो डिस्टेंस ट्रैवल पे वेव है, वेव तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो एक्स विल बी इन मीटर्स दिया होगा. टाइम टी इन सेकंड दिया होगा. वाई इन मिलीमीटर या सेंटीमीटर दिया होगा. और जब आप इसका यूनिट लिखेंगे, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, और वाई इज टू बी टेकन इन सेंटीमीटर, इट इज गिवन, लेट अस सपोज. तो फिर इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखने पड़ेंगे. ए इज इक्वल टू सो मेनी सेंटीमीटर. ओके. और आपको अगर इसकी वैल्यू चाहिए, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स. अगर आपको ये चाहिए कि वेव, मान लीजिए वेव ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, एक्स की वैल्यू दे दी. When wave has traveled a distance of 100 meters, then what was the amplitude of the particle? अब यहाँ ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज एक्स डिपेंडेंट. दैट माय पॉइंट. यहाँ हमने ए को कांस्टेंट दे दिया था, यहाँ एक्स डिपेंडेंट कर दिया मैंने. ऐसी वेव दे रखी है. ओके. तो इसमें ये जो वाई की मैक्सिमम वैल्यू ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एक्स डिपेंडेंट है. तो आप किस जगह पे आप एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हो, वेव कहाँ पहुंची है, 100 मीटर पे, तो एक्स की वैल्यू 100 डालना पड़ेगा. पर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और ये जो है इसी की एक्स की वैल्यू है. दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर. y is a function of x, y is in centimeter, it is given, x is given in meter. And you want what is the amplitude when the wave has traveled 100 meter distance, and amplitude is a x dependent quantity. यहाँ x की वैल्यू डालनी पड़ेगी. ये x अगर मीटर में डालते हैं, लेकिन y तो आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यूनिट का क्लैश नहीं होना चाहिए, उसको उसी में एक्सप्रेस करनी है. ठीक. पहली चीज क्या पता लगी, एम्पलीट्यूड. दूसरी क्या है, फेज. तीसरा क्या है, इपोक. ओके. और कोई चीज पता करनी है, जैसे टाइम पीरियड. यहाँ बैठा है, ये ओमेगा, कंपेयर इट विद दिस ओमेगा टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा. तो ओमेगा इज 314 with its proper unit. Then what is K? K is the coefficient of x. K is 0.5. If somebody asks you what is the speed with which wave is progressing, so I told you the speed is omega by k. Omega is 2 pi by t, k is 2 pi by lambda. This will be lambda by t, means n lambda, and n lambda is wave velocity. If you divide omega by k, you will directly get wave velocity. And if you want particle velocity, then you have to differentiate this, dy by dt. And if you want slope, you have to differentiate y with respect to x. x dependent भी है. यहाँ देखो आप, अगर आप यहाँ से dy by dx मांगते तो क्या होता, ये कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी माइनस kx. Then you have to differentiate this with respect to x. So the dy, you want dy by dx, slope of xy curve, dy by dx, and y is a dependent, y dependent on x.
y is a function of x. Yes, sir. So you can get dy by dx from this by differentiating y with respect to x, not with respect to t. So dy by dx will be a, this sin differentiation will be cos omega t minus kx, फिर इसको differentiate करके multiply करेंगे तो it will give you minus k. It is independent of x, differentiation will be 0 with respect to x, और इसका minus k. आया समझ? This is dy by dx. फिर आपने बोला dy by dt, वो क्या आया? ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस की एक्स. ओके. फिर आपने बोला डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी वेव वेलोसिटी, इधर डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी वाई बाई डी टी, ये दोनों का सोर्स ये है, लेकिन डी एक्स बाई डी टी का सोर्स ये नहीं है. ओके. एक्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं दिया है, बट वी नो डी एक्स बाई डी टी इज वेव वेलोसिटी. एट माय पॉइंट. फिर आपको क्या क्या बताया था? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी. ये बताया ना. अब डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, डी वाई बाई डी टी ये रहा, डी एक्स बाई डी टी भी है. ओके. इन तीनों को आप रिलेट कर सकते हो. तो आपको ये एक गिवन एक्सप्रेशन है जो प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसको स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करना होता है. और आपको कुछ भी चीज़ निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, डी एक्स बाई डी टी तो v है, ये तो स्पीड ऑफ वेव है, ये तो ओमेगा बाई के भी होती है. ठीक है ना. जरूरी नहीं है कि डी एक्स बाई डी टी से ही v निकलेगा. डी एक्स बाई डी टी मीन्स इन टाइम डी टी वेव हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस डी एक्स. डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड. ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव है इन टाइम डी टी, तो वेव ने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, तो ये वेव वेलोसिटी. ये पार्टिकल वेलोसिटी है डी वाई बाई डी टी. ठीक है ना. तो यहाँ वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी और डी वाई बाई डी एक्स में जो रिलेशन अभी आपको ड्राइव करके दिया है, हाँ जी, उस यहाँ माइनस आएगा उसमें. पार्टिकल वेलोसिटी विल बी माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स. एक्सेप्ट रिलेशन ये आएगा यहाँ से. आपके करके देखना, ये आपकी एक्टिविटी होगी. क्या होगा? u इज इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ से ओके. तो ये जो गिवन फंक्शन आपको दिया है, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करके कुछ भी आइटम आपसे पूछी जाती है. जैसे मैंने बोला कि आपसे एम्पलीट्यूड पूछ लिया, और एम्पलीट्यूड में फिर एक्स आ रहा है, तो एक्स दिया होगा तभी आपको एम्पलीट्यूड वेव का पता लगेगा एट ए पर्टिकुलर टाइम और एट ए पर्टिकुलर पोजीशन वेयर द वेव हैज रीच्ड. ओके. बाकी आपको क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, या डी वाई बाई डी टी चाहिए, या डी एक्स बाई डी टी चाहिए. डी एक्स बाई डी टी मीन्स आपको ये चाहिए, तो डी एक्स, यही डी एक्स बाई डी टी है वेव वेलोसिटी. ओके. तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे आपको ओमेगा मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ टी, आपको के मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके. ये सारा फेज है. आपको इपोक मिल जाएगा, t0 और x0 पुट करो, जो बच गया वो इपोक है. यहाँ इपोक पाई बाई 2 आ रहा है. ओमेगा से आपको टाइम पीरियड पता लग जाएगा. इसको आप 2 बाई टी लिख दो, यू विल गेट टी. इसको 2 बाई लैम्डा लिख दो, यहाँ से वेवलेंथ पता लग जाएगी. वेवलेंथ वेव की पता लग गई, टाइम पीरियड पता लग गया, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी पता लग गई. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी तो आपको पहले ही पता है. दैट माय पॉइंट. तो अब मैं कंसेप्ट जो ले रहा हूँ कि अगर आप दो वेव लेते हैं,
तो वेव, अब दो वेव लेते हैं तो क्या उनमें कोई फेज डिफरेंस है? जैसे हमने मान लो एक वेव ले ली, उसका फेज ये है, दैट इज 2 पाई बाई टी T1 minus 2 pi by x, 2 pi by lambda into x. Second wave phase is 2 pi by t into T2, 2 pi by lambda into x. These two phases are of two different waves. And these two waves have traveled the same distance, but they have taken different time. And phase is a function of x and t. If x is different, there will be phase difference. If t is different, there will be phase difference. And if x and t both are different for two ways, again there will be phase difference. जैसे दो बसें दिल्ली से चलती हैं, चंडीगढ़ आना, ठीक है ना, दोनों सेम टाइम पे शुरू हुई, लेकिन चंडीगढ़ में आते हुए दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन एक ने 4 घंटे लगाए, एक ने 4.5 घंटे लगाए। हमने बोला ड्राइवर से, तुम सेम स्टेशन से चले थे, सेम स्टेशन पे पहुंचे हो, सेम टाइम पे चले थे, वो 3.5 घंटे में यहाँ पहुंच गई, तुमने आधा घंटा फालतू क्यों लिया? आ गया ना दो बसेज में फेज डिफरेंस। किसके कारण आया? बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। जो पाथ है, जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है दिल्ली टू चंडीगढ़, तो सेम है दोनों का, x same है, but they have taken different time to cover the same distance. And if any of these two are different for two different waves, there will be phase difference. Okay? Now here there is no path difference. They have covered the same distance, but they have taken different time. The phase difference will be phi 2 minus phi 1. When you subtract this from this will get cancelled, and you will get 2 pi by t into T2 minus T1. The example which I have given you, the two buses started from Delhi, they reached the same station, Chandigarh, covering same distance, taking different time. तो टाइम में कितना डिफरेंस था? एक 3.5 घंटे में आ रही है, 4 घंटे ले रही है, आधे घंटे का टाइम डिफरेंस हो सकता है, 5 मिनट लेट हो गई हो, टाइम डिफरेंस तो कम ही होगा। कारण कुछ भी हो, ओके जी रश था, ओके जी पंक्चर हो गया था, ओके चाय पीने रुक गया था, कास्ट तो कुछ भी हो सकता है, बट वाई दे हैव टेकन डिफरेंट टाइम कवरिंग सेम डिस्टेंस? देयर विल बी फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस और बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। ओके, तो ये फेज डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। इफ दिस इज ए स्मॉल फेज डिफरेंस because of small time difference, दो 100 मीटर रेस लगाने वाले दो खिलाड़ी, ठीक है ना, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन एक आधे सेकंड में एक लीड कर जाता है, उसको फर्स्ट रैंक दे दिया जाता है, दूसरे को सेकंड पोजीशन दी जाती है। दोनों ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन एक ने 1 सेकंड फालतू लगाया। देयर वाज ए टाइम डिफरेंस ऑफ 1 सेकंड, देयर वाज नो पाथ डिफरेंस, दोनों ने 100 मीटर कवर किया, लेकिन 1 सेकंड का डिफरेंस आ गया, एक पहले पहुंच गया, टाइम डिफरेंस हो गया, इसलिए उसको डिक्लेयर कर दिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड बैक है इसका, बिकॉज ऑफ ओनली 1 सेकंड टाइम डिफरेंस। तो सिमिलरली दो बसों दिल्ली से चंडीगढ़ आने में सेम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टाइम अलग अलग लगाया है, जिसके कारण फेज है वो तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, वो तो पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो फेज डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। ओके, तो क्या रिलेशन आया? इफ यू टेक ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज वेव, ओके, and from here to here there is one wave, and in terms of time it is capital T. Displacement time graph
for one complete vibration. Okay, एक चक्कर काटने में जो टाइम लगा वो t है. Okay, ये फेज है, फेज डिफरेंस है. फेज मीन्स एंगल है. ये टाइम है, एक्स पाथ है. ओके, तीनों के डिफरेंट यूनिट है. टाइम डिफरेंस मतलब सेकंड्स में लिया. टाइम डिफरेंस, पाथ तो डिफरेंस था ही नहीं, सेम पाथ था. तो फेज जो है वो रेडियन में होगा. तो फेज डिफरेंस जो आया वो टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करता है. और अगर ये टाइम डिफरेंस इसके बराबर है, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू टी, दो पार्टिकल में एक वाइब्रेशन का डिफरेंस आ गया, देन इफ delta t is equal to capital T, then delta phi will be 2 pi. If same graph, displacement time graph, but here we are taking omega t, not time but phase. Omega t, okay, phase. डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स पर टाइम एंड एक्स बोथ. तो यहाँ हमने ओमेगा टी ले लिया, एंगल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. शेप ऑफ द ग्राफ विल बी सेम, बट इन दिस टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम इतना है और इन टर्म्स ऑफ फेज 2 पाई है. टाइम डिफरेंस ऑफ कैपिटल टी मीन्स फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई. यहाँ देखा आपने, टाइम डिफरेंस इज टी, फेज डिफरेंस इज पाई. यहाँ रखो तो टी टी गेट कैंसल. तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम डिफरेंस कैपिटल टी, द कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी ऑफ 2 पाई. तो सेम आइटम इन टर्म्स ऑफ टाइम ये है, इन टर्म्स ऑफ एंगल ये है. यहाँ टाइम था, यहाँ एंगल था. ये टाइम टी था, ये ओमेगा टी है. ओमेगा टी हैज द डायमेंशन ऑफ एंगल, फेज. तो इतना टाइम डिफरेंस मीन्स इतना फेज डिफरेंस. ओके, तो because of phase difference I have taken because of time difference. Now let us say the phase difference comes not because of time difference, comes because of path difference. Same time में तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 बसें दिल्ली से चली. ओके, 9 बजे चली. हमने 12 बजे पूछा, 3 घंटे के बाद. 9 बजे दोनों बसों के ड्राइवर से बात की, आप कहाँ? बोलो दिल्ली में. चलने लगे हैं चंडीगढ़ के लिए. हमने 12 बजे फ़ोन किया. एक ड्राइवर से पूछा, आप कहाँ हो? बोला मैं तो अम्बाले आ गया. दूसरे ड्राइवर को आप कहाँ हो? बोले मैं तो डेरा बसी पहुँच गया. बोले यार तुम इकट्ठे चले थे ना 9 बजे. अभी अम्बाला पहुंचा 3 घंटे में और एक डेरा बसी आगे आ गया. दोनों ने सेम टाइम में 3 घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया. आ गया पार्ट फेज डिफरेंस. तो फेज विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एक्स एंड टी इज गिवन बाय 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स. ओके, द फर्स्ट particle has a phase 2 pi by t into t minus 2 pi by lambda into x. Time is given same both the particles, but in the same time they are wave is traveling different distances. X distance traveled by wave है, x different है, time same है. Same time में 2 wave अलग अलग distance कवर करती है. तो फेज डिफरेंस आ जाता है 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स. देन फेज डिफरेंस φ2 माइनस φ1 विल बी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू this minus this. This will get cancelled first term. Same time have been given to 2 waves, but they have covered different distances at the same time, and it causes the phase difference between the 2 waves. So here
phase difference, let us suppose delta phi. This is because of path difference delta x. This is delta x. This is delta phi. Small part, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, ठीक है ना। मान लो ये कहता है मैं तो अम्बाले अभी आया हूँ, ये कहता बस मैं अम्बाले से मैं अभी थोड़ा सा 1-आधा किलोमीटर पीछे हूँ। जर्नी तो बहुत लंबी है, 350 किलोमीटर की है, तो आधा किलोमीटर आगे पीछे होना है। स्मॉल पार्ट डिफरेंस, so there will be small phase difference. लार्ज पार्ट डिफरेंस होगा, एक मान लो एक गाड़ी पंक्चर ही हो गई है, 3 घंटे पंक्चर लगाने में लग गए, तो टाइम गैप बहुत सा काफी आगे चली जा चुकी होगी 3 घंटे में, एक पहुंच गई, ठीक है कि नहीं। तो फेस डिफरेंस तो आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। गेट माय पॉइंट। इसलिए दो वेव जो है उनमें जो डिफरेंट वेव है, पहले उनको सेम टाइम दिया गया यहाँ, लेकिन वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले उनको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए दिया गया, उन्होंने डिफरेंट टाइम लिया, ठीक है ना। तो फेज में जो डिफरेंस आया वो टाइम डिफरेंस के कारण भी आ सकता है, पार्ट डिफरेंस के कारण भी आ सकता है। तो ये हमारा फेज डिफरेंस है। हम इसको इनमें दोनों में रिलेशन लिख सकते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। एक हमारे पास फार्मूला आ गया जो फेज को पाथ में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस? इसको आप लैम्डा पुट करके देखो। इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, then phase difference will be 2 pi. Okay, it means corresponding to path difference lambda, the phase difference between two waves will be 2 pi. तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Let us take this wave. So in terms of time it is capital T, in terms of angle it is 2 pi. In terms of distance, it is lambda. जैसे केमिस्ट्री में करते हैं 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, इक्वल टू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। सब इक्वलेंट है। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, 1 mole equivalent to molecular mass, 1 mole equivalent to 22.4 liter at STP. Equivalent नहीं। तो similarly, this is time, this is phase, this is path. 3 आइटम है, and all these 3 are related to each other. ये है time, ये है phase, तो ये है path. Capital T time equivalent to 2 pi phase equivalent to lambda path. And this is a converter. You can convert path difference into phase difference. Okay? Yes, sir. Let us suppose two waves, they have a path difference lambda by 2. Then what will be the corresponding phase difference? ये लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, corresponding phase difference पाई। If you are given path difference, you can convert it into phase difference. And if you are given phase difference, you can convert it into path difference. You have a converter. Yes, sir. Okay, phase difference is equal to 2 pi by lambda multiplied by Path difference. path difference. It's very important. Yes, sir. बस